एक ही फिगर के अंदर, एक ही फिगर, जैसे अगर आपको याद हो लास्ट क्लास में जब हमने प्लॉट किया था तो हमने प्लॉट करके एक फिगर के अंदर एक ग्राफ आया था. नाउ आई वांट मल्टीपल ग्राफ्स, यानी मल्टीपल फंक्शंस आई शुड से. पहले हम एक फंक्शन प्लॉट कर रहे थे, अब हम मल्टीपल फंक्शन प्लॉट कर रहे हैं इन द सेम फिगर. तो लेट मी जस्ट कट डाउन ऑल दीज थिंग्स so that you understand step by step. So you are able to see मैंने import किया हुआ है बेटा, import matplotlib dot pyplot as plt. ठीक है, वी हैव गिवन एन array x इज इक्वल टू दिस. हमने x इज इक्वल टू 2, 4, 5, 6, 8 is given a list. Then y1 is another thing, and then y2 is another thing. Now look at it. Y1 is another 2, 4, 6, and 8, similar to x, and y2 is 4, 16, 36, and 64. That means कहीं ना कहीं मैं चाह रही हूँ जो प्रोग्राम है उसमें मैं x वर्सेस y1 एंड x वर्सेस y2 प्लॉट करना चाहती हूँ. दैट मीन्स आई वांट टू हैव two plots, one of x versus y1 and another of x versus y2. Now I am showing the another point part जो मैंने delete कर दिया था. I'm not spending time typing on this. We are going to use a term called subplot. ठीक है, एक ही ग्राफ के अंदर, एक बड़े ग्राफ के अंदर दो फंक्शन. इनफैक्ट डू यू अंडरस्टैंड, मैं एक ग्राफ के अंदर दो फिगर जो मांग रही हूँ. जस्ट लेट मी शो यू अनदर थिंग. वेट मिनट बेटा, वेट अ मिनट. Let me show you some other let us do the two functions in the same graph wala part first, so that you differentiate with what I'm trying to say. आपको ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है प्रोग्राम बेटा, Yes, इंपोर्ट ma'am. मैटप्लॉट. अब आप इसे प्लीज रीड करिए प्रोग्राम को. आई एम नॉट गोइंग टू डिलीट एंड कॉपी पेस्ट अगेन, मैं टाइप भी नहीं कर रही हूँ. व्हाट वी हैव डन इज वी हैव इंपोर्टेड द मैटप्लॉटलिब, देन वी हैव यूज्ड इन लिस्ट x 2, 4, 6, 8. देन y1 एक फंक्शन हम बना रहे हैं t स्क्वायर. नाउ प्लीज रीड दिस लाइन एंड आई होप यू विल एबल टू अंडरस्टैंड, बिकॉज आपको फॉर फंक्शन भी समझ में आ चुका है. y1 is a new list that is generated with t cross t. And what is t? For t in x. तो x की एक एक वैल्यू हम पहले t में लेकर जा रहे हैं और उस t की वैल्यू का स्क्वायर कर रहे हैं. तो वट एवर द t स्क्वायर इज कमिंग इज बीइंग स्टोर्ड इन y1. So if your x is 2, 4, 6 and 8, तो ये आपका 2, 4, 6 and 8 जो कि x है वो t बनेगा. तो एक बार t बनेगा 2, एक बार t बनेगा 4, then t is equal to 6, then t is equal to 8. Now that t each and every time, because it is in loop, for लग रहा है, for एक loop में चलेगा ये. t की जितनी वैल्यूज आएंगी वो t का स्क्वायर करेगा और y1 में स्टोर करेगा. So if your t goes 2, तो t square यानी 2 square is 4. 4 is stored in y1. Then t is 4, then 4 cross 6, 4 cross 4 is 16. Then 6 cross 6 is 36. That means I'm trying to find out 2, 4, 6, 8 का square. This would be basically a list would be generated. मैं यहाँ टाइप कर देती हूँ बेटा, 4, 16, 36, 8 8 64. Now this list kind of list would be generated when, ठीक है, when this function would be या when this equation would be executed. तो हमने instead of writing directly like this, we have used a method to, हमने x की अब मैं यहाँ जैसे x चेंज करूंगी ऑटोमेटिकली ये y1 फंक्शन चेंज हो जाएगा. आई नीड नॉट डेलिबरेटली राइट द y1 वैल्यू एज 4, 16 और 32 और वट एवर जो वैल्यूज आ रही है. नाउ y2 भी मैं ऐसी एक लिस्ट जनरेट करना चाहती हूँ. नाउ दैट इज टी क्यूब. टी क्यूब मतलब जैसे से टी की वैल्यू चेंज होगी, जैसे से एक्स की वैल्यू चेंज होगी, टी की वैल्यू चेंज होगी और टी क्यूब निकल के आएगा. तो 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, 8 का क्यूब. तो बेसिकली आई एम ट्राइंग टू मेक अ लिस्ट ऑफ y1 and y2, where y1 is a list of x square and y2 is a list of x cube. I hope everybody understands this. Now we are going to call the function plt.plot. अब plt.plot सबको ये क्लियर है फंक्शन कि आपको plt.plot में आपको आर्ग्यूमेंट्स में एक x लिस्ट देनी है और एक y लिस्ट देनी है, so that it is plotted. So when I give x list and y as a list, so that list is plotted in the form of line, and I need to give the different color to it. Let's say I've given red and I've given O means circle points होने चाहिए, and double dash I'm saying that means double dotted line, double dashed line आएगी. तो अगर मैं plt डॉट प्लॉट x कॉमा y1, मैं y1 को प्लॉट कर रही हूँ बेटा, प्लीज टेक केयर. So y1 when I'm plotting, I'll get a line in red color with circle at the points, specific points and dot dashed line. So plt dot plot will plot that.
Now again PLT dot plot is being written here, and now I'm going to plot x versus y2. So that's why we've given x comma y2. So now the color is different. We have chosen blue and we have chosen a triangular and then a dashed line. Okay? And then PLT dot show. So let us run this program and then you will understand कि हम क्या चाह रहे थे इसमें, और अब मैं अगला एक और प्रोग्राम कराऊंगी in that. So if you look at it, the output of this program is coming like this. तो हमने चाहा क्या था, हमने एक प्लॉट चाहा था x वर्सेस y1 एंड एक प्लॉट था x वर्सेस y2, वेयर y1 इज t स्क्वायर एंड अनदर इज t, y2 इज t क्यूब. तो ये आपको रेड कलर वाली जो लाइन दिख रही है बेटा विद सर्कल पॉइंट, दिस इज द प्लॉट ऑफ x वर्सेस y1 which is x basically t square का ग्राफ. now this line is t cube का ग्राफ. so what it is happening here, ये पूरा आपका एक फिगर है या एक, आप ऊपर फिगर लिखा था ना, फिगर 1, राइट. तो ये पूरी एक फिगर है, पूरा एक ग्राफ है, इसमें दो फंक्शन है. सो बेसिकली इफ आई वांट टू कंपेयर टू थिंग्स, तो यूजुअली आपने बुक्स में देखा होगा ग्राफ्स ऐसे होते हैं कि एक ही ग्राफ के अंदर तीन फंक्शंस या चार फंक्शंस प्लॉटेड है. दिस मेक्स योर विजुअलाइजेशन वेरी इजी, दिस मेक्स योर कंपैरिजन वेरी इजी. तो हम ये पाइथन से प्लॉट कर सकते हैं यूजिंग द plt डॉट प्लॉट फंक्शन. एंड इस प्लॉट फंक्शन को अगर हम रेपिटेटिवली यूज करें इस तरीके से, लाइक दिस, राइटिंग अ plt डॉट प्लॉट देन अगेन plt डॉट प्लॉट देन अगेन plt डॉट प्लॉट, तो जब प्लॉटिंग होगी वो एक ही फिगर पे होगी और एक ही फिगर के अंदर बहुत सारे ग्राफ्स या बहुत सारे फंक्शंस जिसे मैं बोल सकती हूँ वो प्लॉट हो जाएंगे. आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद दिस. मैम ओके. हाँ बेटा बोलो. मैम इस रन करने में एरर आ रहा है. बेटा वेट करो, आई एम नॉट इवन स्टार्टेड रिकॉर्डिंग. व्हाई डू पीपल वांट रिकॉर्डिंग? गेट एवरीथिंग बेटा. लगता है आपको जरूरत है रिकॉर्डिंग की. चलो, किसी को डाउट हो तो आप वैसे पूछ लीजिए बेटा, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. आर यू एबल टू सी द इसमें स्क्रीन? एरर आ रहा है मैम, इसमें एरर आ रहा है, नो मॉड्यूल फाउंड विद दिस नो नेम. मॉड्यूल फाउंड. did you install matplotlib in your system? मैम कमांड प्रॉम्प्ट है. uh, बेटा एक काम करते हैं, लेट्स मूव ओवर विद द थ्योरी, और उसके बाद मैं आपसे स्क्रीन शेयर करा के आपकी स्क्रीन देखकर प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी. ठीक है. ओके मैम. मैम एक बार आप वो लाइन रिपीट कर दीजिए जो कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखते हैं. नंपा कहाँ की बात कर रहे हो बेटा? कमांड प्रॉम्प्ट पे आपको जब आपने इंस्टॉल करना है तब की बात कर रहे हो? नहीं नहीं, कमांड प्रॉम्प्ट इंस्टॉल कर लिया उसके बाद. मैं अपना सिस्टम पे दिखा रही हूँ, आपको दिख रहा है? यहाँ पर बोल रहे हो? हाँ हाँ हाँ. तो डिड यू राइट यस मैम. pip install? Did you write that when you wrote matplotlib? यस मैम. हो रहा था कि नहीं हो रहा था? अच्छा मैम, मैंने वो एक स्पेलिंग मिस्टेक कर दी. हाँ चेक कर लो बेटा. मैम बस यही लिखना होता है ना, पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब. हाँ जी हाँ जी, जैसे आपने pip install numpy लिखा था, pip install हम्म. matplotlib करोगे, हाँ एंटर करो. हाँ, नीचे आ गया वो. आ गया? हम्म. I hope it is installing now. Once your matplotlib is installed, you will be able to see the cursor again. अब फिर अब यस आप मैम. अपने प्रोग्राम पे जाइएगा बेटा, आइडल पे. देन अगेन राइट द कमांड. आप वहां पर आइडल पे शेल पे ही लिख लीजिए इम्पोर्ट कमांड, इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब, और एंटर मारिए. तो अगर अगर आपका ग्रेटर देन के दो सिंबल्स जो आते हैं, if they are हम्म. coming, that means your matplotlib is already installed and it is being imported on your python shell. नहीं आता तो मुझे अभी भी बताना. एरर आ रहा है, अभी भी एरर आ रहा है, नो मॉड्यूल नेम्ड मैटप्लॉटलिब. ठीक है, we'll take over in the practical part. ठीक है. there is some problem with your installing part, otherwise और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. ओके मैम. Let's continue with the theory and I'll see to your problem. ओके So मैम. everybody is clear with this part, wherein we are going to just plot two or more different graphs in one figure. So this is more of plotting. एक ही फिगर के अंदर बेटा, एक ही ग्राफ के अंदर मुझे दो फंक्शन चाहिए, बेसिकली टू फंक्शंस इन द सेम ग्राफ. So this was a requirement which can be fulfilled with the help of plot function, and all you need to do is you have to write repetitively the plt dot plot function
तो जब आप रेपिटेटिवली, अभी तो आपने पिछली क्लास में एक ही बार पीएलटी डॉट प्लॉट लिखा था ना, तो एक ही बार पीएलटी डॉट प्लॉट लिखने में यू वर प्लॉटिंग वन ग्राफ, you were plotting one graph and one figure. Right now what we are going to do, we are plotting more than one function but in the same figure, in the same graph. ठीक है, now this is this kind of plotting. Obviously this also helps in comparison. इससे आप बहुत अच्छे से comparison कर सकते हैं कि दो ग्राफ में एक कोई linear है कि नहीं है, the other is non linear, how is the data changing or not. There is another way, और जो आपने बुक्स में देखा होगा, जिसमें कि आपका एक बहुत बड़ा, let me show you on the word file. I think you must have seen some graphs like this. मान लीजिए ये कुछ इस तरीके से है, यहाँ एक डायग्राम ड्रॉन है, यहाँ एक डायग्राम ड्रॉन है, यहाँ एक डायग्राम ड्रॉन, बेसिकली दिस इज ये वन पूरा आपका ये पूरा एक फिगर है और इसमें आपने 6 या अलग अलग 9 ग्राफ्स प्लॉट करे हुए हैं. दिस इज वन ग्राफ, दिस इज अनदर ग्राफ, दिस इज अनदर ग्राफ, दिस इज अनदर एंड सो ऑन. तो इस टाइप की प्लॉटिंग भी आपने देखी होगी, यू मस्ट हैव सीन इट. कैन वी ड्रॉ इट यूजिंग योर पाइथन प्रोग्रामिंग? Yes, we can draw it using our Python programming. This is basically called as dividing your graph into, या dividing into plot into subplots. आप अपने एक प्लॉट को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज subplot. So now I'm opening the program of subplotting and just a second beta. Okay, so I'm now opening this program. अब आप यहाँ देखिए बेटा, एक है x, एक है y1, एक है y2. आई एम डायरेक्टली स्पेसिफाइंग इट. लास्ट प्रोग्राम में हमने डायरेक्टली स्पेसिफाई ना करके फॉर फंक्शन लिया था and we were finding out the value of y1 and y2 with the help of t square for in with the values of x. Similarly we were doing the same things with y2, but यहाँ मैंने directly specify कर दिया value. Obviously इसका disadvantage है, when I'm specifying the values directly, that means अगर मुझे कुछ change करना होगा, if I have some changes in x and similarly I want some similar changes in y1 and y2, I have to repetitively write the change y1 and write the changes in y2. I would not directly have the changes done just by changing x. लेकिन अगर मैंने वो तरीका यूज किया होता तो I would have got it much more easier way. Now what you do is you have to first divide your plot into parts. So if you read, there is a command written here, subplot. दिखाई दे रहा है बेटा? Are you able to see this command? Yes, ma'am. Now subplot is a function which to divide your graphical area into parts. Now it requires 3 arguments. You're able to see यहाँ पर मैंने bracket में 2 1 1 लिखा है. So basically subplot is a function which requires 3 arguments when I'm plotting my graph. Please understand it properly. First is your number of rows. Second is the number of columns. First is the number of rows, is the number of columns. So if you look at the file which I showed you, here how many rows and how many columns are there? If I'm plotting this graph into 9 parts, dividing this graph into 9 Two parts, columns. how many rows, how many columns? 3 rows. And 3 columns. Please beta speak up. 3 rows and 3 columns. So that means अब मैं अपने ग्राफ को, अगर मैं इस तरीके से अपने ग्राफ को प्लॉट करना चाहती या डिवाइड करना चाहती, तो यहाँ मेरी आर्ग्यूमेंट्स 2,1 ना होके 3,3 होती. नाउ इफ इट इज सेइंग 2,1, दैट मींस आई एम ट्राइंग टू डिवाइड माय ग्राफ, डिवाइड माय एरिया ऑफ फिगर, जो भी मेरा डायग्राम होगा वहां पर, इनटू 2 rows and 1 column. So 2 rows and 1 column means something like this. इतना हिस्सा जो मेरा मैंने अभी आपको हाईलाइट किया, 2 रोज हैं और एक कॉलम है, तो एक ग्राफ ऊपर आएगा बेटा और एक ग्राफ नीचे आएगा, राइट. तो अगर मुझे ज्यादा ग्राफ चाहिए होंगे या ज्यादा प्लॉट्स करने होंगे तो आई कैन इंक्रीज दिस एक्स, दिस फर्स्ट आर्ग्यूमेंट एंड सेकंड आर्ग्यूमेंट. नाउ टॉकिंग अबाउट व्हाट इज थर्ड आर्ग्यूमेंट. थर्ड आर्ग्यूमेंट बेटा वो होती है जो आपको विच द नंबर ऑफ द ग्राफ विच यू आर प्लॉटिंग. लेट आपने ग्राफ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 2 स्क्रीन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. एक अपर पार्ट है क्योंकि अपर रो है और एक लोअर रो है. कॉलम एक ही है, 2 रोज है, एक अपर रो और एक लोअर रो. नाउ व्हेन यू आर प्लॉटिंग इट, आपने यहाँ सब प्लॉट फंक्शन के बाद जब आप यूज करेंगे तो यू विल मेंशन आप पहला ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं या दूसरा graph plot. So plt dot plot, you have to write plt dot subplot. You have to tell the number of rows and column in that subplot
and you have to tell the column or row या element which you are या graph the number of the graph which you are plotting. So if I'm plotting writing 1 here, that means ऊपर वाला graph is being plotted. First graph दो पार्ट में डिवाइड हुआ है ना बेटा, तो दो ग्राफ में डिवाइड हुआ है, तो ग्राफ नंबर 1. Then I would use the plt dot plot function and then I would write x comma y1 क्योंकि मैं x versus y1 plot करना चाहती हूँ, and obviously the attributes if I want. चाहे मैं line width change करना चाहती हूँ, I want to change the marker size, I want to have a specific color, I want to have G as the color, I want to have star at the points, and then I have a dotted dashed line. When I'll plot the second part of my graph, मेरे को नीचे वाला ग्राफ भी प्लॉट करना है, तो again I have to write plt dot subplot. Then again I would write 2 rows, 1 column, but this time I will write comma 2. Comma 2 का मतलब है I am going to do the plotting now for second plot of my graph, second part of my figure, second जो diagram होना चाहिए वो. So earlier was the first one, this is the second one. Again I would write now the plt dot plot command. अब मैं इस टाइम पे x versus y2 plot करना चाहती हूँ, तो I will write the whole command and as per your wish you can change your marker size, line width, etc. ठीक है. लेजेंड इज बेसिकली जब आप दो ग्राफ प्लॉट करते हो या जो भी प्लॉट करते हो, तो देयर इज ऑलवेज अ लेजेंड अंडर द ग्राफ. लेजेंड मींस आप वो डॉट डॉट दिखाओगे कि दिस इज फॉर एक्स ग्राफ, दिस इज फॉर वाई ग्राफ, दिस इज फॉर जेड ग्राफ. Then x label, y label and title and obviously show function has to run up. Show के बगैर आपका ग्राफ दिखाई नहीं देगा. So let me run this and you will be seeing the difference now. Now look at this. अब आपने क्या किया, आपने अपने पूरी ग्राफ फिगर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. वन पार्ट इज द अपर पार्ट and other part is the lower part. Now the upper part is basically your subplot 1 and lower part is your subplot 2. That's why you wrote subplot 2 comma 1, 2 rows. Can you imagine it as 2 rows beta? Are there 2 rows? This is one row of your graph and this is another row of your graph. Yes, ma'am. Yes, ma'am. And this is one column. एक ही कॉलम चल रहा है, ठीक है. Yes, ma'am. Now Yes, ma'am. when I was plotting this, अगर आप ध्यान से देखिए, just let me go back to the program and graph. They are both in front of each other. आप शायद realize कर लोगे. plt dot plot x comma y1 with green in color, ऊपर वाला, ठीक है. Then pl subplot 2 comma 1 comma 2, that means I'm trying to plot the second part of my subplot, second graph of my subplot, which is x comma y1 with red in color like this. So it is up to me. I have divided my graph into two portions. I could have done it in 3 or 4 parts depending upon, लेकिन obviously it has to always divide into even number of parts. Let us try doing it. मैं इसमें दो rows और दो columns कर देती हूँ. Let's see what's the difference you will be able to realize. चलेगा? Let's see. अब आप ये देखिए बेटा. Now there are 2 rows and since you're not able to see क्योंकि हमने नीचे graph plot ही नहीं करे हैं, ठीक है. We have just divided it but we haven't plotted it. So this is graph area 1, this is then 2, then this would have been 3, this would have been 4. So अगर एक second बेटा, somebody is joining. So if I want to change this, I want to have graphs in the lower part, ठीक है. Then I can have another instruction here to plot. Let me plot again. मैं repeat कर देती हूँ so that you are able to see in the lower part we are able to divide. But यहाँ पर बेटा मुझे क्या change करना पड़ेगा? Can anybody tell? क्या लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पर? Subplot 2 comma 2 comma 3. Then here subplot 2 comma 2 comma 4. ठीक है. So again what I'm trying to do is मैं x1 y1 को यहाँ भी plot करवा रही हूँ, लिखवा draw करवा रही हूँ, and x y1 को यहाँ पर भी third area में भी plot करवा रही हूँ. So let us try that. So I'll not get the empty part of my graph now. All the 4 graphs would be plotted. And since we have used the same plot function, we haven't changed anything. So the graphs are repetitive graphs. I hope everybody is able to see this subplotting. मैम लेजेंड कहाँ यूज हो रहा है ग्राफ में? But a legend is not coming up here. There is some problem with my system. So probably मैं check करूँगी. See, you are able to see the error also. No handles with labels found on the
to put in legend. ठीक है, we'll look over it कि legend आ जाए. There is some issue. Otherwise legends are there, और legends आपको जब दिखाई देंगे तो they would be here, somewhere here. Where is the graph? Let me run it again. Legends आपको यहाँ दिखाई देते हैं, written on the graph. ठीक है, that this graph is dot, ये वाला graph is for x square, this is for this and this is for this. So that's why थोड़ा सा issue है legends में. I'll try to find it out. So this was more about plotting on the same figure different graphs in two ways. आप एक ही ग्राफ के अंदर दो कर्व्स या दो फंक्शंस प्लॉट कर सकते थे, या दो फंक्शंस को अलग अलग करके पार्ट्स में डिवाइड करके या सब प्लॉटिंग करके भी आप कर सकते थे. तो नाउ इट इज अप टू यू हाउ यू वांट टू रिप्रेजेंट. अगर मैं चाहती तो मैं पहले तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकती थी, दैट आल्सो गिव्स मी अ कंपैरिजन, and or the other way around. This method is also fine. We could have compared two graphs like this. So this was more of having multiple graphs on the same figure. So let's move forward. Now I want to show you, we need to move to further parts. अब हमने line plotting सीख ली, curve plotting सीख ली. There are various multiple types of graph that can be plotted in matplotlib, like histogram, bar chart, ठीक है, scatter plot, pie chart, they're all available. So let us start with going through all these, and then obviously आपको इनको practice करना है, because without practice you won't be able to do them. So I'm sharing the screen again. I'm just showing you this presentation so that you understand that these are the plots that you have to try. So obviously everybody understands now matplotlib is again a package for 2D plotting. मुझे 2D plots करना है, only for 2D, ध्यान रखिएगा, not for 3D. ठीक है, अगर आपको 3D plotting करनी है तो there are other packages like Visual Python. So अगर आपको 2D plotting करनी है, 2D plotting में you want to do histogram, bar chart, pie chart, all these plots can be done using matplotlib, and you have to practice all those plots. So what are the type of plots that are available in this? Bar chart, bar graph, histogram, scatter plot, area plot, hexagonal bin plot, and pie plot, etc. So let's start with few of the plots other than what we did right now. हम line plotting कर चुके हैं. Line plotting के लिए आप चाहे इस तरीके से दीजिए बेटा, plt dot plot आपका फंक्शन है ये, आप या तो इस तरीके से दीजिए, दोनों स्पेसिफिकली 1,3 लिस्ट यहाँ लिख दी एंड 4,5,1 ऐसे लिख दी, या the way we started with, we use x as a variable for 1, 2, 3, we use y as a variable for the another list 4,5,1, then you wrote your plt dot plot x comma y. तो आप कैसे भी करिए, it is up to you, but make sure that you have the function plt dot show. Again we discussed in the last class, title होना चाहिए आपके plot पे. You can write using plt dot title, you can have labels, you can use x label, y label. Functions जो होंगे आपके वो होगा plt dot y label, plt dot x label. Style, this is what we discussed in the last class. आप color change कर सकते हो, line width change कर सकते हो, आपकी मर्जी है. आप line width change करना चाहते हो तो use the attribute line width. ठीक है, you use to line width attribute से आप इसकी line की width change कर सकते हो, मोटा या पतला. ठीक है, you want a thicker line, you want a thinner line, you want a solid line, you want a dashed line. लाइन के ऊपर आपके पॉइंट्स होने चाहिए विजिबल या नहीं पॉइंट्स होने चाहिए विजिबल, दैट्स आल्सो व्हाट यू कैन. सो दिस इज मोर ऑफ फॉर्मेटिंग योर ग्राफ, adding style to your graph. Now next come to the type of different types of graph जो हम discuss करना चाहते हैं. So we'll start with first, that is bar graph. Now in order to मैं run करके दिखाऊंगी बेटा, let's do this program first. Again when you are plotting the bar graph, you need to have the values. आपकी एक x list होनी चाहिए और एक y list होनी चाहिए. So let's say 1, 3, 5, 7, 9. Now corresponding one will have the value as bar में 5. If you look at this graph, 1 will have corresponding value as 5. Then 3 will have corresponding value as 2. 2 will have corresponding value as 8 as the other bar. तो अगर आप यहाँ देखिए बेटा, there are two bars being plotted in the same question. One is blue वाला bar and another is green. तो आप अपना जब दो bars plot करें तो make sure there is no overlapping of the bar numbers. You cannot have overlapping of the bar numbers like this. So 1, 3, 5, 7, 9 is the x-axis bar number and the corresponding bar height is given in the other list. So you can have another bar with 2, 4, 6 and 8 like this, and 8, 6, 2, 5, 6.
like this as the other bar height. Let us do it. अगर किसी के पास सिस्टम है and they can do it simultaneously, please try doing it. 13579. Can anybody repeat the values for me? 13579. Here you can take anything. That's your height. Let's say only one plot you're going to do. We're not going to do the other plot right now. Just a second. Is anybody able to see any mistake that's happening here? PLT dot bar. Ma'am, matplotlib dot pyplot. Okay, dot py plot. I've missed out writing. Yes. Matplotlib dot py plot. Module founder PLY लिख दिया बेटा गलती से. यहाँ पे लगे बनने दे। आ- दिख रहा है बेटा आपको दिस बार ग्राफ? Now you can Yes, see ma'am. this bar is being plotted with a simple function dot bar. Now if you look at it, 1 will have corresponding bar height as 4, 3 will have corresponding bar height as 6. So 1 is having 4, 3 is having 6, 5 is having 7, 5, 4 और 6 के बीच में 5 is having 7 height and so on. तो इस तरीके से आप अपनी बार प्लॉटिंग कर सकते हैं. Now you can have another bar here, but then please make sure that you don't repeat it because वो overlapping हो जाएगी and you will not be able to see it even. So if I let's say 13579 है, so let's make it 2, 4, 6, 8 and then comma 10. Let's say we have the same height, so we'll have the same height at the other graph also, and automatically it is going to assume the other default color also. Are you able to see it? Yes, ma'am. So this bar function is a simple bar function. It is going to help you out in drawing your bar graphs like this. So let's move forward and understand various other types of graphs available and what are the functions which you can use. Now बेटा अब आपके ऊपर है ये आप लेबल वैल्यूज यूज करके आप ये एक्स्ट्रा चीजें यूज कर सकते हो. प्लीज डू दीज ऑल्सो. ऐसा नहीं कि आपको ये चीजें नहीं आनी चाहिए. If you're using a label, you can label this as that blue color is bar graph of let's say apples and this is the bar graph of let's say oranges. तो ये जितने भी आपने बार ग्राफ स्कूल टाइम में पढ़े हैं तो all you can do is you can plot on your own. So when you're having data visualization being done, so you should know how to plot these graphs and you should know how to format these graphs also. और ये जो styling और ये formatting है, this is also very important because आप plotting कर सकते हो. plotting करने में तो dot bar function लग रहा है, that's good enough, बहुत हो जाएगा, आराम से हो जाएगा. But that graph is not presentable until unless you have the styling or the formatting of your graph. Now for that you require title, you require x-axis, you require y-axis, you require legend, you require labels.
तो ये फंक्शंस आपको पता होने चाहिए, ये एडिशनल फीचर्स आपको पता होने चाहिए हाउ टू यूज इट. So if you're writing label and you're writing a label in that plt dot bar, that label would be correspondingly for that bar. If you're using label command, you can have it for the other bar also. अब ये कलर है, हमने कलर नहीं लिखा था, ऑटोमेटिकली उसने बाय डिफॉल्ट अपने हिसाब से ऑरेंज एंड ब्लू कलर ले लिया था. आपको स्पेसिफिकली इफ यू वांट a particular color, you can use the color function here, you can use the color attribute here and specify your color. color equal to write the color code G, red, blue, cyan, जो भी आप लिखना चाहते हो, you can write like this. So this is the thing that you should know. Just knowing dot bar command is not sufficient. Please try to catch upon and work upon with the other attributes of the bar command also, या bar function also. Now, histogram. Now, histogram क्या होता है? Can anybody give me a hint? What is a histogram? कुछ याद आ रहा हो? स्कूल टाइम में हिस्टोग्राम पढ़ा हुआ है? एनी ट्राई बेटा, ऐसा कोई गलत, ऐसा नहीं कि मैम आप पॉइंट बिल्कुल फ्री हैंड लाइन बनाते हैं. फ्री हैंड. दोबारा बोलो बेटा. मैम जो भी पॉइंट्स में आ गए हैं उन पॉइंट्स को मिलाकर लाइन बनाते हैं. नो. एनीबडी एल्स? Ma'am, it is used to समथिंग represent. रिलेटेड टू. It is. हाँ हाँ. Can I? It is used to represent the frequency of various values in Exactly. data It is set. talking about frequency. So if you have a data, if you have a population ages, जैसे आपको यहाँ डेटा सामने दिखाई दे रहा है, there is a lot of data of have population of different people, ages of different people in a particular population. So you can see 22, 55, 62, 45, 21, 22, 34, 42 and so on. तो ऐसे बहुत सारे लोगों की population दी हुई है ना. इसमें से 20 साल की एज के कितने लोग हैं, 30 इयर्स की एज के कितने लोग हैं, 35 हैं, 40 के कितने हैं, 80 के कितने हैं, 90 के कितने हैं. ये फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट. ना व्हाट यू यूज टू डू इट, जब हम स्कूल में करते थे, वी यूज टू काउंट लाइक 22 को काउंट किया मैंने कितनी बार आया, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, एंड आई यूज टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी एंड देन आई यूज टू राइट कि 22 के सामने लिखा 3 एंड देन वी यूज टू प्लॉट. I hope you remember this. So this frequency of the particular data can be plotted with the help of histogram and just by a simple function called as hist. So if you use plt.hist function, you can easily plot your histogram. All you need to know is what is the data you want to plot, and you should also know कि आप ये जो नीचे की range रखना चाहते हो, ये क्या रखना चाहते हो. So we'll do 2-3 questions on histogram. I'll plot for you and you'll try to understand कि histogram में ये क्या चीज होती है and how it is plotted. So let me show you the graph. So bar graph was the easier one. Histogram में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा. Let me just close all the extra windows so that I don't get confused. Okay. Okay, I've imported the matplotlib as pyplot. Now I require some data. So let's say the data is population COP. I'm writing the data as this. I'm writing the data. मैं randomly बेटा कुछ numbers लिख रही हूँ and I'm repeating the data also. Let's say this. Okay. Now there is a term that is called as bins, which is very important in case of histogram. Now what is bins? Now when you look at it, जब आप बेटा हिस्टोग्राम प्लॉट करते हो तो आपको नीचे एक्स एक्सिस में बेसिकली यू नीड टू हैव नंबर्स इन द रेंज ऑफ दिस ओनली. तो अगर आप हिस्टोग्राम देखो, लेट मी शो यू द हिस्टोग्राम. इसी क्वेश्चन का हिस्टोग्राम ध्यान से देखिएगा बेटा. So you have 22, 55, 62,
45. These are the numbers going starting from, let's say 5 से start हो रहा है, मुझे सबसे छोटा नंबर 5 दिखाई दे रहा है यहाँ पर, and the topmost number which I am able to see is 130. ठीक है, तो अब इसका मतलब मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि मेरी 5 एज के कितने लोग हैं, 10 एज के कितने लोग हैं, 12 एज के कितने लोग हैं. दिस इज द फ्रीक्वेंसी चार्ट विच आई एम ट्राइंग टू शो, एंड द डेटा हैज टू स्टार्ट फ्रॉम 5 till the last value 150 या 130. ठीक है, तो I can have a bin which will give me the lowest value and the last value and the intermediate value जिनको मैं plot करना चाहती हूँ. So if you look at here, this would be a bit confusing for you. 0 लिया है, कॉमा 10, कॉमा 20, कॉमा 40, 30, 40, 60, 70 टिल 130. इसका मतलब ये बिन वैल्यूज वो वाली वैल्यूज हैं जिन पे मैं प्लॉटिंग कराना चाहती हूँ एज टू द फ्रीक्वेंसी क्या है उन पॉइंट्स पे. दैट मीन 0 की एज वाले फ्रीक्वेंसी वाले कितने लोग हैं, दैट वुड बी काउंटेड फ्रॉम द वैल्यूज हियर. 10 एज की फ्रीक्वेंसी वाले लोग कितने. नाउ दिस इज नॉट एग्जैक्टली 10, दिस इज बेसिकली 0 और 10 के बीच के लोग इस एरिया में दिखाई देंगे ऑन दी प्लॉट ऑन विच इज प्लॉटेड ऑन 0th पॉइंट, नॉट इंक्लूडिंग 10. 10 से लेके 20 तक की एज के लोग कितने लोग हैं. आई रिपीट इट, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है सो प्लीज ट्राई टू जस्ट लिसन थोड़ा सा, अगर नहीं समझ में आता तो आई रिपीट इट. 10 से लेके 20 के बीच में, ऑब्वियसली इंक्लूडिंग 10 बट नॉट इंक्लूडिंग 20, 10 से लेके 20 तक की एज के लोग कितने हैं, उनका ग्राफ ऑन 10 वाला पॉइंट, दिस इज द 10 वाला पॉइंट. ठीक है, देन 20 से 30 के बीच में इंक्लूडिंग 20 बट नॉट 30, तो 20, 23, 29 के कितने लोग हैं वो इस वाली थर्ड ग्राफ में आएंगे. देन 30 to 40 like this. So basically it is more like having divided your slots here like this and then उसके ऊपर प्लॉट किया. So if you look at 0 और 10 के बीच में कितने लोग हैं, how many people are there, can you look at this population ages वाला data, any data which is between 0 to 10. There is a number 4, बेटा ये 65 है, this it was not 5, this is 6 and 5 इकट्ठा, that is 65. Are you able to see one number which is lesser than 10? Yes, ma'am. मुझे दिख रहा है 4, right? So that means there is one frequency, there is one data, one frequency between in the range of 0 to 10, not including 10 please, huh? Then between 10 to 20, there is no data between 10 to 20. Are you able to see any data? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. तो आप यहाँ देखिए बेटा, 0 के बाद एक ग्राफ प्लॉट हुआ है. ठीक है, 0 के बाद एक ग्राफ प्लॉट हुआ है, दिस इज बेसिकली 0 ओनली, दिस इज नॉट 10. एक एक आप ये देखिए 20-20 का गैप है बेटा, 0, 20, 40, 60 एंड सो ऑन. तो 0 से 10 यहाँ पर आ रहा होगा बीच का 10 पॉइंट, इफ यू आर एबल टू सी माई माउस. 0 और 10 के बीच में एक ही फ्रीक्वेंसी थी, इसलिए बार ग्राफ की फ्रीक्वेंसी हाइट जो है वो 1 है, 1 है. हिस्टोग्राम की जो बार हाइट फ्रीक्वेंसी है दैट इज 1. नाउ बिटवीन 10 एंड 20 there is no frequency available, no data available, that means there is no plotting here. Now come and please look at 20 and 30. 20 और 30 के बीच में there must be some values, let us count those values and cross check with this graph. So 22 is 1, then again 21 and then 22, 3 values I am able to see. Are you able to see any other value which is in this range of 20 and 30? No. So 20 और 30 के बीच में एक हिस्टोग्राम के लिए प्लॉट हुआ है and the value is correspondingly 3 on the graph. Frequency value is 3. Let's just cross check for one more and we'll draw it on our own. 30 and 40 के बीच में बेटा, 30 and 40 के बीच में प्लीज देखिए, how many values are you able to see? 1. Only one, 34, right? एक लास्ट वैल्यू और चेक कराती हूँ, एंड नाउ दैट चेकिंग वुड नॉट बी हियर इन दिस रेंज, लेट अस कम हियर. 120 और 130 के बीच में काउंट करिए बेटा. 1, 2, 3, और कोई वैल्यू दिख रही है? प्लीज बेटा काउंट करिए एंड टेल मी हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर between 120 and 130.
मैम 3 3 values, 2, 120, 121 and 122. ग्राफ में क्या दिखाई दे रहा है? 4 मैम 7। 7 वैल्यूज किसको दिख रही है बेटा? 120 और 130 बीच में. आप क्रॉस करो बेटा प्लीज. इट्स नॉट 7. How many values you are able to see here on the plot? 4. Now what happens is when you specifically bins like this, मैंने अभी आपको बोला 0 और 10 के बीच में 0 इंक्लूड होगा लेकिन 10 इंक्लूड नहीं होगा. सिमिलरली 10 और 20 के बीच में वो नंबर्स जो 10 से बड़े हैं बट 10 है और 10 से बड़े हैं बट 20 से छोटे रहेंगे वो इंक्लूड होंगे. 20 will not be included. Similarly 20-30 के रेंज में all the numbers which are from 20 including 20 but lesser than 30 would be included. But when it comes to the last point, of the bin, 120 will also be included and 130 will also be included. That's why you make it the frequency in this range as equal to 4. 120 is also added, 121, then 182 and then 130 is also added. That's why the frequency is coming out to be 4. Okay? So when you're defining your bins in a histogram, make sure that whatever जो भी डेटा आपके पास है ऑब्वियसली आपको बिन्स उसी हिसाब से डिसाइड करने पड़ेंगे. Now bins में जो last value होती है that is added as the part of frequency in the last bin. So make sure that you are doing it correctly. So that's why you are having value as 4 in the range of 120 and 130. Let us cross check this value at 110 and 120 also just for a practice. 110 और 120 के बीच में क्योंकि 120 is also there. So I want you to cross check. So 110 और 120 के बीच की कितनी वैल्यूज हैं? 1, 4 2, 3, 4. 120 is not counted क्योंकि अगर 120 काउंट हो रही होती तो 5 हो जाता. So this is 4 and that's why you're able to see the frequency as 4 here. Is everybody clear with the how histogram is plotted? I hope you recalled it properly. Yes, ma'am. So let me show you something here. I'll show you this web page. It's going to give you more information on histogram. So in the case of histogram, there are two ways how we can plot it. The first way I told was a difficult way. मैंने आपको सबसे पहला थोड़ा मुश्किल way बता दिया था. There's another way also. So let us have both the ways clearer, both the methods to be clearly understood because आपके पास histogram data होगा आपके पास when you will be working on programs of data science. You will have a lot of data, but when you are going to plot it, when you're going to visualize it, so it is up to you whether you want to use histogram, whether you want to use pie chart or what. But when you plan to work on histogram, you should be clear with two methods you can use for plotting. One is this method जो अभी हमने किया है. There another method is what I'm going to tell you right now. So this was the method जो अभी हमने किया था where we were talking of bin. Method 2 with equal bins. So there is another method जिसमें हम यहाँ पर बिन्स डिसाइड नहीं करेंगे, हम खुद नहीं देंगे बिन्स उन प्लॉटिंग के लिए. We will ask the system to decide bins for us or we'll ask the system to calculate the bins for us. यहाँ तो मैंने bins लिख दिए थे कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 and so on. We deliberately wrote the bins. This was in my hand as a user. I can change my bin also. मेरा मन था 10 और 20 को क्लब इन करने का तो मैं instead of 0, 10, 20, 30 I could have made 0, 20, 40, 60 and so on. That bins also I could have done it. So let us try finding bins which they can be calculated at the time of programming itself. So we can pass the integer. Just a second beta. Huh. So we can pass an integer in bins stating how many bins or towers can be created in the histogram and the width of each bin is changed accordingly. So let's take this program. Let's take this example beta. Import matplotlib dot pyplot as plt. We have a data of height like this 189, 185, 195, 149 and the last value is 167. So we have a range of numbers in the range of I think they're starting from 140s to they're going till 195, right? I just give the value plt function plt dot hist. The parameter जिसको मुझे plot करना है height, comma the edge color if I require some edge color and then I write bins as equal to 5. मैंने bins की value नहीं दी है. I have just given a number to the bin. मैंने उसे कहा कि 5 bin बना दीजिए. 5 bin मतलब बेटा ऐसे 5 boxes 1, 2, 3, 4, 5. These are called as bins.
This is what we were discussing. So you have to use that bins as bins only. You cannot change that variable. So that bin is required for histogram. So when 5 bins are being asked here, so that means your minimum data and your maximum data. So if you look at your graph, your minimum data was, I think, 140 and your maximum data was 195. So 140 और 195 के बीच में बराबर विड्थ के 5 बिन बना दीजिए. This is what is the requirement and this is what has been asked in the program. So here the bins are number of bins is equal to 5. That means number of 5 bins are to be created. Setting bins in an integer creates equal size. जब मैं integer लिख रही हूँ बेटा 5, that means सबकी size same होगी. तो अगर मेरा मन कर रहा है कि मुझे ऐसा हिस्टोग्राम बनाना है जिसमें आई डोंट स्पेसिफाई द बिन एंड आई जस्ट वांट इक्वल नंबर ऑफ, so let's say 5 divisions, yeah, 5 bins, so I'll write bins is equal to 5. Now if I want to have the frequency chart more clearer, more visualized, बहुत ज्यादा क्लियर देखनी है मुझे फ्रीक्वेंसी, तो आई कैन रिड्यूस दिस बिन, इंक्रीज दिस बिन नंबर एंड रिड्यूस द चार्ट साइज. तो मैं अगर बिन को 10 कर दूंगी तो 10 इक्वल पार्ट में डिवीजन चाहिए मुझे, तो वो मिल जाएगा ना. इन ऑर्डर टू गेट द बिन्स वैल्यू, what the compiler does inside is, what the program does inside is, it picks up the maximum value and the minimum value. ठीक है, 195 was your maximum value of your data, 140 was your minimum value of your data. Find out width by subtracting these and dividing by the width that is dividing the by the number of parts that was asked. So 195 minus 140 divided by 5 is equal to 11. So that means हर bin का size 11 है. Is it clear? Is everybody clear with this point? हर bin का size 11 है. मैंने bin की values नहीं बोली है बेटा, मैंने bin का size बोला है. So that means आपका bin कहाँ से शुरू होगा? So if you look at it, 140 से पहला bin शुरू हो रहा है and will go with 11 size. So that means 151 तक शुरू होगा. Is it clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, Then ma'am. अगला bin कहाँ से शुरू होगा? अगला bin will start from 151 and will end up to 162. Then agla would start at 162, will end at 173. Then agla bin will start at 173 and will end at 184. The next bin will start at 184 and will end at 195. So this is how your bins are going to create. आपको create नहीं करना है, आपने directly एक number दे दिया and ask the compiler to create the bins for you. So now please just have a cross checking. 141 और 140 एंड 151 के बीच में कितना फ्रीक्वेंसी दिखाई दे रहा है? प्लीज आप अपने सिस्टम पे देखिए. आई एम रिपीटिंग माय क्वेश्चन. 140 से लेकर 151 तक का पहला बिन बना है हमारा. व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी दैट इज गोइंग टू कम आउट फ्रॉम दिस डेटा? 140 would be included, but 151 will not be included. So if you have 151 in this data, don't include it. Just cross check करके बताओ कितना आ रहा है. बोलिए बेटा. Either you are not able to understand or you don't want to speak. At least बताओ मेरा क्वेश्चन समझ में आया या नहीं. Just give me yes or no for that. It's 4, ma'am. It's for Yes. 149, 147, 140 and 144. These are the 4 values that would come out in this frequency and you're able to see the chart shows 4 like this. ठीक है? So this is how you're going to plot it. आपको ये plotting आनी चाहिए, ये method भी आना चाहिए. It might be आपसे कहा जाएगा कि bin आप अपने आप decide कर लीजिए. It might be like bin इतनी bin का decide कर लीजिए. All you need to do is you just need to write the data which you want to plot. Height is the variable in which data is stored. And you need to specify the bins. So if you are specifying the bins equal to 5, it will do the automatic calculation of your bins. This is the second method which I wanted to tell you. Let us just take another more example. आप 7 bin कर सकते हैं. मैंने अभी आपको बताया more the bins, more the visualization. You'll be able to see in a smaller range. आपको frequency chart अच्छे से दिखाई दे जाएगा. So for 7 bin calculation, again it will pick up the maximum value and the minimum value divided by 7
and then you'll get the graph as, let's say the values of width of each bin as 13.4. Now that 13.4 width will be shown in the diagram like this. Okay. Now this is the second method जो already हम कर चुके हैं. ठीक है, हम अपनी मर्जी से भी बिन दे सकते हैं. दिस इज द वे विच आई डिसाइडेड. अभी हमने ऊपर बिन डिसाइड लिख दिया था, एक ही बात है, आप बेटा प्लॉट डॉट हिस्ट के अंदर लिख दीजिए इसे. इट्स अप टू यू. Since the marks is a whole huge amount of data, we would need a separate line for writing the data. That's why marks variable is mentioned here, and we have a array of data like this. We write marks here. Bins अगर हम छोटे bins खुद ही decide करें तो we can write here. Otherwise we can have it bins as the another variable in the next line, and then write comma bins here. That's it. Okay. So here in this question, if you're able to see on the screen, your data is of marks. Marks are varying from 1 till maximum 5. हमने automatically अपने bins decide कर लिए 1, 2, 3, 4, 5. So now the plotting would be between 1 and 2. The marks would be calculated, जिसमें जिनके 1 होंगे marks वो add होंगे, 2 add नहीं होगा. Similarly 2, 3 की range में 2 add होगा, but 3 वाले marks add नहीं होंगे for frequency. Similarly, 3, 4 में 3 would be added, but 4 will not be added. But when it comes to last value of the bin, 4 and 5, I again repeat, all the marks which are value 4 would be added, and all the marks which are of the value 5 will also be added. So that's why you are getting, if I ask you to check this 4, 5, please check it out here and match it with the answer output. So 4 I'm able to see. How many 4s and 5s I'm able to see? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I'm able to see 4 and 5 as 8, and we are able to see, I think 8 से बड़ा है बेटा. Am I missing anything? एक second. 1, 2, 3, sorry, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yes, 9. That's why it was more than 8. इसकी height 8 से ज़्यादा थी. It was 9. So you are able to see in the range of 4 and 5, the frequency is coming out as 9. Now it is up to you to use attributes like edge color. You want to use the edge color as black, or if you don't want to use edge color, so it won't show. Unequal bin width भी आप दे सकते हो. अभी आपने पिछले क्वेश्चन में 1, 2, 3, 4, 5 दी थी. Unequal bin width is something like this: 150, 140, 160, 175, 180. हमने अपना जो क्वेश्चन किया था, probably we had the bins of equal width with 0, 10 and 20 or something. If I did we do in the program? Okay, in the first program in the presentation slide, we have not typed it here on the ideal. तो आपकी मर्जी है, आप अपना bin कैसा देना चाहते हैं. आप variable width का देना चाहते हैं, similar width का देना चाहते हैं. You will graphically see the difference. Your bin is, this is of a smaller width bin, this is a larger width bin, and so on. So you'll be able to see this. Is this clear, beta? Yes, ma'am. There is one more method associated with defining these bins. One more method is that you can use a range function. ठीक है. Now range function में क्या होता है बेटा, आपका minimum data उठाया जाएगा, your maximum data, and you can decide your bin width, whatever you want. You add it and you get it from range. Don't do it range wala if you don't want. At least try to understand these first two methods. These are good enough. आपको bins decide करना आना चाहिए. Either you specifically specify the bins like this, or you specify by finding the, by giving the divisions and letting the compiler find the bin values for yourself. So this was all about histogram. So you should know how to plot the histograms as well. So I think this was histogram. You can plot it. We can go for further plots also, like scatter plot. Scatter plot is more of having points plotted on the graph so that you can see whether they are either scattered randomly, or they are scattered across one particular line, or they are scattered away from the line. तो आप बेस्ट फिट कर्व पे जब काम करते हो तो आपको स्कैटर प्लॉट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर आपका सारे पॉइंट स्कैटर प्लॉटिंग कर दिया आपने and you're not able to find the best fit line, so then you would use functions and algorithms to have a best fit line for these. So for that scatter plot is required. तो आपको plotting आनी चाहिए, जैसे histogram plot करते हो वैसे scatter plot करना भी आना चाहिए. Again, I would tell you the function is there available. Scatter function is available. All you need to do is you need to have your x-axis, your x points, and you need to have your y points. Use plt.scatter and just have the points plotting like this. It is more like plotting points only.
जैसे आपने पीएलटी डॉट प्लॉट यूज किया था, उसमें मल्टीपल पॉइंट्स की जगह एक एक पॉइंट प्लॉट हो रहा था। आप बार बार पीएलटी डॉट पॉइंट, पीएलटी डॉट प्लॉट, पीएलटी डॉट प्लॉट, पीएलटी डॉट प्लॉट लिखते, so if you are having 10x points and 10y points, it would be very difficult to write 10 times plt dot plot, plt dot plot, plt dot plot. So the easiest function available is, जो कि काम plt dot plot का ही कर रहा है, that function is plt dot scatter. So if you write plt dot scatter, it uses the whole array and gives the points rather than line. ठीक है, तो x और y को अगर आपको scatter plot करना है तो you can use it. Rest of the things available are same. Again, X label, Y label, title, legend and show, these are same. Again, label आप use करिए, color आप change करना चाहते हैं आप color change करिए. If you want to use color as black, blue, green, you can use the color option available. So this was scatter plot. Stack point की बजाय मैं pie chart पे जाते हैं बेटा. This is the next plot that you should be knowing, pie chart. Now again, import your matplotlib. Now, जैसे हिस्टोग्राम में बिन्स वाली टर्म वाज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो हाउ टू यूज बिन्स. सिमिलरली स्लाइसेस हियर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ जो आपके लिए पैरामीटर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज योर स्लाइसेस, योर लेबल्स, योर कलर्स, एंगल जिस पे आपको स्टार्ट करना है, शैडो, एक्सप्लोड और ऑटो पैक. डू यू वांट मी टू स्टार्ट दिस टुडे, or you want to practice your histogram and other plots for the practical and then move with the pie chart in the next class? बेटा आप बताइए. मैम नेक्स्ट क्लास, मैम हम नेक्स्ट स्टार्ट क्लास. नेक्स्ट क्लास. So we have in the next class, we are left with pie chart, which is the most important chart in the histogram, and we'll do probably plotting of some circles, eclipse, these things also. So last में हम ये खत्म करेंगे and we'll be all done with the matplotlib वाला package. उसके बाद we'll shift over to pandas. ठीक है बेटा? So I think मैम if we look at this slide, we are already done with multiple plots. Multiple plots में subplot I've already told you. So this is that's it. Okay. So आप ये please वाली अब आप एक काम, बेटा this is all available on Google. I मैम don't कैन यू want to. प्लीज. हाँ बेटा ओके. बोलो. ये बेटा मैंने मैम आप स्लाइड शेयर से ही उठाया है, तो आप अगर गूगल करोगे तो आपको ये स्लाइड मिल जाएगी. आई डिड नॉट स्पेंड टाइम ऑन मेकिंग द स्लाइड, रादर आई प्रेफर शोइंग द प्रोग्राम हियर वर्किंग लाइक दिस. तो ठीक है, मैम आप इस तो वाली स्लाइड की लिंक भेज देना तो हम अच्छा ठीक है, मैं लिंक भेज दूंगी. ठीक है, यस मैम. मैं इसे मैं ओके इसे मैम. कॉपी कॉपी करके भेज भी देती हूँ. ठीक है. So यस all मैम. you need to do is right now is beta, please practice all the commands so that you guys get comfortable. क्योंकि ultimately your agenda is, your purpose is to go to programming part of data science. तो वहां पर आपको ये commands अगर यूज होंगी तो आपको पहले से ही prepped up होना चाहिए for these commands. ठीक है. So यस मैम. please start with lab because you have the lab timings right now. I want you to do all your matplotlibs. In fact, मैं अभी ना ग्रुप पे भेजूंगी कुछ commands. Please run those commands. And जो मैंने क्लास में अभी बताया मैं वो भी शेयर कर रही हूँ. I'm sharing that link with you, so you will able to see that PPT and run those commands. तो आप histogram